Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani. I welcome all the viewers to the lecture series of Law of Tort. In this video, we will discuss about kinds of damages in tort. We know very well that in tort, whenever person's legal right is violated, he is entitled to file a suit before the civil court and can claim compensation, can claim damages. सबको हमको पता है कि जब भी किसी का लीगल राइट का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो वो सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है और वो कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है. So it is the prime remedy available for the tort. So in the law of torts, the remedies available to the injured person can be divided into two heads. There are two heads in which the remedies are available under the tort. The first one is the judicial remedy and the second one is an extrajudicial remedies. So in the judicial remedies, the first is a damages. It means the person is entitled to claim a compensation whenever his legal right is violated. जब भी किसी पर्सन का लीगल राइट वायलेट होता है तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, वो कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है. सो जुडिशियल रेमेडीज आर रेमेडीज बाय वे ऑफ एक्शन of law. The injured party may institute a suit in a court and obtain damages. There are three kinds of judicial remedies, in which the first one is damages. Judicial remedies are those remedies which are available in the court. We can file a suit before the court of law and can avail such type of a remedy. So the first type of judicial remedy is a damages. Award of damages is an ordinary and essential remedy for tort. It is the very aim of the tort to provide a compensation to the injured party. Injured party को compensation देना ही ये prime remedy है law of tort में. So let us proceed towards the kinds of damages. So in the kinds of damages, the first kind is a nominal damages. So ordinary damages are equivalent to the harm suffered to the plaintiff. Definitely, ordinarily damages are equivalent. The person is entitled to claim such damage which caused to him. जितना loss हुआ उतना मिलता है, ये ordinary remedy available है. But where there has been infringement of the plaintiff's legal right but no danger, the law awards him nominal damages in recognition of his right. If the person's legal right is violated, because in the law of tort, what is essential? The violation of legal right must be there. If the person's legal right is violated, though he has suffered no loss, he will be entitled to claim compensation. पर्सन का लीगल राइट का वायलेशन होना ज़रूरी है, उसको लॉस हो या ना हो वो कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द मैक्सिम इंजुरिया साइन डैमनम. इंजुरिया मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राइट, साइन मीन्स without, and damnum means damages. There are certain cases in which the person's legal right is violated but he has suffered no loss. So under such a circumstances, only for the purpose of recognition of right, the court used to grant a nominal damages. So ऐसी situation में court nominal damages grant करता है सिर्फ उसका right recognize करने के लिए. So the first kind of damages is a nominal damages. Second one is a real damages. Real damages are those which are awarded or compensation for damage actually suffered by the plaintiff. So if the plaintiff has suffered any loss, any damage, then court is entitled and the court is empowered to grant such damages. Whatever the loss caused to the plaintiff, the court grants such damages and that damages is known as the real damages. जितना loss हुआ plaintiff को court उतना लॉस उसको उतना कंपेंसेशन कोर्ट उसको ग्रांट करेगा और ऐसा कंपेंसेशन ऐसे डैमेजेस को ही रियल डैमेजेस कहेंगे. नॉट सिंपली बाय ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ लीगल राइट वायलेटेड. यहाँ पर सिर्फ लीगल राइट रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है बट उसके साथ साथ जितना लॉस हुआ, जितना रियल डैमेजेस हुआ उतना कंपेंसेशन प्लेंटिफ को मिलेगा. तो सेकंड टाइप ऑफ डैमेजेस इज अ रियल डैमेजेस.
Third one is exemplary damages. It means generally the damages are compensatory because the idea in civil law is to compensate the injured party by allowing him a sum equivalent to the loss caused to him. So it is a basic idea in the law of tort that the person will get such damages which he has suffered. जितना उसको लॉस हुआ उतना उसको कंपेंसेशन देने का ये रियल एम है लॉ ऑफ टॉर्ट का. बट देर आर अ सर्टेन सिचुएशन इन विच द कोर्ट यूज टू ग्रांट अ कंपेंसेशन मोर देन द लॉस कॉस्ट. कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर कोर्ट ऐसा कंपेंसेशन ग्रांट करता है. फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को लॉस हुआ है 1,000 रुपया और कोर्ट ग्रांट कर रहा है 10,000 रुपये. सच damages are known as the exemplary damages. We have discussed in the injurious sign damnum one case Bhim Singh versus State of Jammu and Kashmir in which the court grant an amount of 50,000 as a compensation though no loss suffered to the MLA. MLA को कुछ लॉस नहीं हुआ था फिर भी 50,000 as the exemplary damages. So the example is set out for the another case. दूसरे केस के लिए एग्जाम्पल सेट आउट किया जाता है कि जो कोई ऐसा एक्ट करेगा उसको इतना कंपेंसेशन देना पड़ेगा. सच कंपेंसेशंस आर नोन एज exemplary damages. So when the damages awarded are in excess of the material loss suffered by the plaintiff, जितना लॉस हुआ प्लेंटिफ को कोर्ट उससे ज़्यादा उसको कंपेंसेशन ग्रांट कर रहा है और ऐसे डैमेजेस को exemplary damages कहा जाएगा. So this is the third kind of damages. So next kind is a general and special damages. General damages are damages caused to the public at large and special is a loss caused to the individual. So when there is a personal injury, compensation may be given under the following heads: personal pain and suffering and loss of the enjoyment of life. Whenever the personal injury caused to any person, then court used to grant a compensation on the basis of personal pain and suffering. जितना उसको पर्सनल पेन हुआ, सफरिंग हुआ और जिसके वजह से वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर सक रहा है, ये कंसिडर करेगा कोर्ट कंपेंसेशन ग्रांट करते वक्त. एक्चुअल पिक्यूनरी लॉस रिजल्टिंग इन एनी एक्सपेंसेस reasonably incurred by the plaintiff and the probable future loss of income by reason of incapacity or diminished capacity of work. जब भी स्पेशल डैमेजेस जो किसी इंडिविजुअल को होता है, कोर्ट जब भी कंपेंसेशन ग्रांट करता है तो कोर्ट ध्यान रखता है इस चीज़ का, उसको पर्सनल पेन, उसको सफरिंग कितना हुआ, एक्चुअल पिक्यूनरी लॉस कितना हुआ और प्रोबेबल फ्यूचर लॉस ऑफ इनकम बाय रीजन ऑफ इनकैपेसिटी और डिमिनिश्ड कैपेसिटी ऑफ वर्क. वो इंजरी होने के वजह से उसका फ्यूचर लॉस कितना होने वाला है, कितने दिन वो प्रॉपर काम नहीं कर सकता है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ग्रांट करता है जनरल एंड स्पेशल डैमेज. सो द फोर्थ कैटेगरी ऑफ डैमेजेस and kinds of damages is a general and special damages. Next one is a continuing damages. Prospective and future damages mean compensation is made not only for present loss but also as best it can be for future loss in the form of prospective damages. So the court used to grant a compensation not only for the present loss but for the future loss also. कोर्ट सिर्फ प्रेजेंट लॉस के लिए कंपेंसेशन ग्रांट नहीं करता बट जो इंजुरी के वजह से जो फ्यूचर लॉस होने वाला है, इन फ्यूचर होने वाला है, डैमेजेस कंटिन्यू है, लॉस कंटिन्यू है, तो कोर्ट कंपेंसेशन भी कंटिन्यू ग्रांट कर सकता है. देयर इज वन केस लॉ भगवान दास वर्सेस मोहम्मद आरिफ. In this case, the damage were awarded to boy when his leg were cut down by an accident for the medical expenses, future expenses for livelihood and the expenses for the maintenance of every year. So इस केस में एक लड़के का पैर टूट गया था, कट गया था एक्सीडेंट में, तो कोर्ट ने उसको मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कंपेंसेशन ग्रांट किया. उसके साथ साथ फ्यूचर एक्सपेंसेस फॉर लिवलीहुड, फ्यूचर में जो ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको खर्चा आने वाला था वो भी कोर्ट ने ग्रांट किया. एंड द एक्सपेंसेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एवरी ईयर, और हर साल का मेंटेनेंस उसको ग्रांट किया है. तो ये है कंटिन्यूइंग डैमेजेस. तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ डैमेजेस which we have discussed under this particular video. So I hope you like this video, and if you like this video please hit the like button and notify